नीट परीक्षा को लेकर हुए विवाद और छात्र आंदोलन के समर्थन में समस्त आम्बेडकरी बौद्ध समाज, नवसारी तथा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठन के प्रतिनिधि गुणवंत राठौड़ ने बताया कि सोनम वांगचुक सहित शिक्षा के समर्थन में आंदोलन कर रहे लोगों और छात्रों द्वारा जंतर मंतर पर किए गए धरना प्रदर्शन और अनशन के दौरान पुलिस द्वारा कथित लाठीचार्ज और दमनात्मक कार्रवाई की गई, जिसके विरोध में यह ज्ञापन दिया गया। गुणवंत राठौड़ ने दावा किया कि इस कार्रवाई के दौरान महिलाओं पर भी लाठीचार्ज किया गया, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई। ज्ञापन में मांग की गई कि भविष्य में छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलनों के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई न की जाए। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी उठाई गई। संगठन ने नीट सहित विभिन्न परीक्षाओं में कथित पेपर लीक की घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने तथा परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गुणवंत राठौड़ समस्त आंबेडकरी बौद्ध समाज અને રિપબ્લિકન પાર્ટી ઓફ ઇન્ડિયા આઠવલે નવસારીની સાથે આજે નવસારી જિલ્લા કલેક્ટરશ્રીને આવેદનપત્ર આપવા આવેલા છીએ કે દિલ્હીની જંતર મંતર ઉપર સોનુ વાંગચુક શ્રી અને નીટના શૈક્ષણિક લોકો શિક્ષકો વિદ્યાર્થીઓ જે જંતર મંતર દિલ્હી જંતર મંતર ઉપર આમરણાંત ઉપવાસ ઉપર બેહેલા વિરોધ પ્રદર્શનમાં પ્રદર્શન કરી રહેલા વિરોધ કરી રહેલા તેને આ સરકારના ઇશારે અને ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન શિક્ષણ મંત્રીના ઇશારે ધરપકડ કરવામાં આવી, આંદોલન તોડી નાખવામાં આવ્યું। સંવિધાનની અંદર જે મૂળભૂત અધિકારો આંદોલનના છે તે સંવિધાનને નુકસાન કરેલું છે તેવા લોકોને ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન જેવા લોકોને જેલમાં નાખવા જોઈએ, રાજીનામા આપવા જોઈએ। સરકારે ખરેખર ખુરશી પરથી હટી જવું જોઈએ। ભારતીય જનતા પાર્ટીએ સત્તા પર ભોગવવી નહીં જોઈએ।